major tragedy struck Kurnool this morning. In Andhra Pradesh's Kurnool, a private bus carrying 30 passengers caught fire near Chinnatekur in Kallur Mandal. Now, according to the police, nearly 39 passengers, including 2 children, were on the bus at the time of the accident. 19 persons, including 2 drivers, escaped with minor injuries, while the police has detained the driver. Another one is yet to surrender. As many as 11 charred bodies have been unearthed, while 9 persons are yet to be identified. 21 passengers were hospitalized. The 2 drivers escaped by jumping from the bus. The bus, which had been travelling from Bengaluru to Hyderabad, caught fire after hitting a 2-wheeler on the national highway. According to official sources, the incident occurred at about 3:30 in the morning. The bus collided with the 2-wheeler, triggering a massive blaze that quickly engulfed the entire vehicle. Eyewitnesses say that flames first erupted on the front portion of the bus before spreading rapidly. 12 passengers managed to escape through the emergency exit with injuries. They were later shifted to the Kurnool government hospital for treatment. The exact number of casualties is not confirmed, but we are given to understand that the bus had about 39 passengers, including 2 children, when it caught fire at the time of the accident. Of those 39 passengers, nearly 19 people managed to escape. As many as 11 bodies have now been unearthed, with 9 passengers yet to be identified, given that their bodies are charred. Many passengers are currently in the hospital. They are undergoing treatment. Now, leaders across political spectrum condoled the loss. In the bus tragedy this morning, Prime Minister Modi took to social media platform X to express his condolences. He said, and I quote, "Extremely saddened by the loss of lives due to a mishap in Kurnool in Andhra. My thoughts are with the affected people and the family during the times of crisis, praying for the speedy recovery of the injured." An ex-gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's relief fund would be given to the next of kin of each of the deceased. The injured will also get about 50,000 rupees. That's what Prime Minister's office informed earlier today. Meanwhile, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu has also condoled the death of the people and said that the state will provide all possible support to those who are affected. Further, President Droupadi Murmu has also reacted on that unfortunate tragedy. He wrote, and I quote, "The loss of lives in a tragic bus fire accident in Kurnool is deeply unfortunate, and I extend my heartfelt condolences to the bereaved family members." And the President also wished speedy recovery to those who are currently in the hospital. Just a couple of minutes ago, you read the tweet put out by Telangana Chief Minister Revanth Reddy, which is also on your screens at the moment, where he expressed his heartfelt condolences to the families of the victims. He wrote that he has directed Chief Secretary and DGP to coordinate with Andhra authorities to ensure relief measures are implemented. Revanth Reddy also said that he has instructed officials to provide better medical assistance to those who are injured and ensure that relief programs are done on a war footing. Whose tweet on your screens at the moment, he said that he expresses his deepest condolences to the families of those who lost their lives in the tragedy and hopes for their speedy recovery. Now, the repeated occurrence of such accidents raises questions about the safety of public transportation system in the country. My colleague Noor Mohammed joining us with more details. Noor,
काफ़ी भारी मात्रा में लोग फंसे हुए थे बस के नीचे। हमें सुनने में आ रहा है कि लगभग 8 से 10 बॉडीज़ को बरामद किया गया है। देखिए, इस हादसे ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरे देश को हिला दिया। कहीं न कहीं फिर एक मर्तबा जो वॉल्वो बसेस का ट्रैवल करना उतना सेफ नहीं है, इस हादसे से पता चल रहा है। देखिए, कल रात 10:30 बजे बस हैदराबाद से निकलती है बैंगलोर के लिए और आंध्र और कर्नाटक के सरहद पर ये घटना हुई है। अभी तक जो मिसिंग लोग हैं, उनको लेकर अब सरकार को ढूँढने के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही है। 11 डेड बॉडी तो बस से बाज़ाब्ता निकाली गई है और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, वहीं पे भी उनका पीएम करके उनके परिवार को हैंड ओवर कर दिया जा रहा है। ऑलरेडी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। देखिए, जो लोग मिसिंग है, अब इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सरकार ये लोग कहाँ गए थे? आस-पास के जितने भी जो दवाखाने थे, जितने भी एम्बुलेंस के जो सर्विसेज़ थे, तमाम को सरकार जाँच-पड़ताल कर रही है। जो बस में से कूद कर अपनी जानें जो बचाए थे 21 लोग, वो तो करनूल और आस-पास के दवाखानों में उनको भर्ती कर दिया गया है। कुछ लोग ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है, कुछ लोग नॉर्मल ज़ख्मी है, जो जिस वक़्त इंसिडेंट हुआ था, उस वक़्त वो बस से कूदने में कहीं न कहीं इस हादसे का शिकार हुए थे। देखिए, इस तेज़ रफ़्तार में जिस वक़्त ये बस जो बहुत तेज़ी के साथ जा रही थी, यहाँ तक अधिकारियों ने कहा कि बहुत तेज़ी के साथ जाने से ये हादसा हुआ है। टू व्हीलर को टकरा देना और टू व्हीलर बस के नीचे चले जाना, उसके बाद डीज़ल टैंक का ब्लास्ट हो जाना और टू व्हीलर का जो पेट्रोल था, वो अचानक उसमें फायर होता है, उस देखते-देखते पूरी तरह बस से आग के लपेट में आ गई है। देखिए, फ़िलवक़्त जो वहाँ पे जो सिचुएशन है, वो इंतहाई बुरा है। पूरा आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरे इस हादसे पर नज़र बनाए रखी हुई है। फ़िलवक़्त सरकार का सबसे पहली कोशिश यही है कि जो लोग मिसिंग है, उनसे ढूँढ के निकाला जाए। अब जो लोग डेथ हुआ है, उनको उतना पहचाना भी मुश्किल है, उनका तो डीएनए करके उनके परिवार को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मगर इस बस के कहीं न कहीं टेक्निकली खराबियाँ बहुत सारे आ रही हैं। इस बस का परमिट खत्म हो चुका है, इसको पॉल्यूशन का जो ये था वो भी खत्म हो चुका है। इस तरह की तमाम लापरवाही आ रही है। अब इस पूरे मामले पर एक केस दर्ज करके नूर, तहक़ीक़ात इनफैक्ट मैं करेंगे आपसे मगर जानना चाह रही थी कि आप बता रहे हैं कि इस बस का परमिट खत्म हो चुका था, बस में काफ़ी सारी खराबियां आ रही थी, इसके बावजूद ये बस रोड पे चल रही थी। इनफैक्ट ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट इस बस को जाने दे रही थी। ये चली जा रही थी रोज़ और इसमें आज ये भयंकर हादसा हुआ जिसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। किस तरीके का एक्शन लिया है सरकार ने ये बस के खिलाफ, बस ड्राइवर के खिलाफ? देखिए, सबसे बड़ी हैरत वाली बात यही है कि जब परमिट खत्म होता है, ये 3 राज्यों के साथ ये ट्रैवल करती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तीनों राज्यों के अधिकारी ऐसा कैसे लापरवाही हो सकती है, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, ये आंध्र प्रदेश के दायरे में आता है। अब आंध्र प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को जाँच-पड़ताल कर रही है कि किन अधिकारियों ने इसको लापरवाही की थी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो दिवाली का जो मौसम था, उस वक़्त तो लगातार तेलंगाना के अंदर तो बसों पर आरटीओ अधिकारी जो है लगातार जाँच-पड़ताल करते रहे, कई जगहों पर चालान भी डाले गए। मगर ये बस 3 राज्यों के अंदर कैसे किसी अधिकारी को नहीं पकड़े गई, कोई अधिकारी क्या जानबूझकर इसको लापरवाही किया था, इस पर पूरी तरह सरकार ने फ़ोकस किया है। इंसिडेंट जहाँ हुआ है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीष सिन्हा भी पहुँच चुके हैं। वो भी जाँच-पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पर लापरवाही हुई है। देखिए, सबसे बड़ी हैरत हुई ये परमिट का खत्म हो जाना, ये उतना आसान नहीं है। कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही हुई है इस हादसे के अंदर। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि इस बस के अंदर भी कहीं न कहीं टेक्निकली खराबी बहुत सारी थी। इसके अंदर जो मॉडिफ़ाई किया गया था, वो कहीं न कहीं इल्लीगल था। इस तमाम तर चीज़ें अब खुल के सामने रही है। पूरी जाँच-पड़ताल होने के बाद ही सरकार एक नतीजे पे पहुँच पाई कि इसके अंदर कौन खाती है, किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। मगर जो कुछ भी हुआ है, ये इंतहाई दर्दनाक है। मगर फ़िलवक़्त सरकार यही ज़्यादा फ़ोकस कर रही है कि इन डेड बॉडियों को उनके परिवार को हैंड ओवर कर दिया जाए और जो मिसिंग लोग हैं, उनको जल्दी से जल्द ढूँढ कर उनका अता-पता निकाला जाए। All right, Noor, thank you very much for all those details. I think we're all wiser in hindsight, and tragedies such as these wake us up to the reality that often in the country, rules are taken to a task where, in this case particularly, this bus which was operating tri-state was allowed to ply on roads despite an expired license, despite the fact that it was modified, and my colleague there bringing out the details that perhaps it was the laxity of the administration that allowed this bus to be operating. And there you have it, resulting in a tragedy, killing more than 10 to 15 people, waking up a little too late therein as far as the Kurnool bus tragedy is concerned, the aftermath of which
we are still trying to come to terms with.